for now. Am I audible to everyone? Right? Yes, Yes, sir. Yeah. Okay. Call me Akash. No need to call sir and all. Okay. So, today's topic is all about the AI integration. Okay. This is one of the, I can say, in most of the industries. Actually, I work with the industry into this AI data science and domain completely. So this AI integration is very, very important. Uh, little bit this, like, is it okay to have complete session in Marathi or somewhere mixture of a Hindi or English or Marathi also? Those who are maybe Hindi, not English, sir. Hindi, English, okay, chalega, no problem. Got it. So I hope. Okay, thanks a lot. So yes, today's lecture is all about जो भी lecture रहेगा अपना. It is total English. Naresh, okay. It's quite difficult. No problem. So yeah. So today's session is all about uh, see, in Hindi and English, I cannot manage, guys. At least one you tell me because see, some of the guys I think they don't understand Hindi. So I'll go with the Hindi and English. Okay. I think that will be a great. Okay. So we have to integrate whatever the BI tool we have in market. We have a lot of BI tools, business intelligence tool. That is Tableau, Power BI we have, and Amazon's Quick. Okay, and that was one of the tool actually. वो भी एक tool है basically BI intelligence या फिर Power BI related कुछ भी functionalities करने के लिए use होता है. उसको AI के साथ इंटीग्रेट करना है अभी. Why this part of AI? Okay, सबको questioning होता है कि इसमें AI की include मतलब what is the necessary to include the AI into that? Okay, that's a very very important part. Okay, we will see at the end of the lecture कि उसके प्रोज और कॉन्स क्या हो सकते हैं एज कंपेयर टू द एआई इंटीग्रेशन. एआई इंटीग्रेशन बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग यू इट इज एटमोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक कोई भी टूल है आपके पास, पावर बीआई हो, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ अ पावर बीआई विच इज अ बूमिंग टूल ओके इन इंडस्ट्री. पावर बीआई को you have to integrate with your any cloud technology, okay, or I can say any large language models or open AI. Just like in market may we have a chat gpt, okay, then we have a Claude. Claude is very booming actually, guys. Then we have a Copilot, okay, Gemini, okay. Then a lot of AI tools we have in the market. What we need to do, business intelligence when joined with the AI, it is like a gen bi, generative bi, okay, which called as a generative business intelligence. In terms we have a gen AI also, हमें gen AI भी होता है, okay, generative artificial intelligence. Same way for business के लिए, okay. So business intelligence we have. So let me share the screen and we'll try to understand the concept and then we'll directly go for the practicals. That's the approach we can follow. Okay, my screen is visible to all of you guys. Yes. Yes. Okay. So see, we are most probably working on Power BI. We have a Power BI, which is a Microsoft tool. Okay. And this is our business intelligence completely. On another side, we have AI tools completely. So just like I can say Gen, I can categorize that as a Gen AI tools. So we have a Claude, okay, we have Copilot, which is also Microsoft's, okay. Then our ChatGPT, okay, is ChatGPT. So there are so many tools. What we need to do in today's scenarios or in today's world, as far as I'm working also, I'm having around 7 years of experience into this domain. Okay. So we need to align this Power BI और integrate this Power BI. ये Power BI को हमें integrate करना है किसी भी एक टूल से. तो मार्केट में सबसे ज्यादा तो बूमिंग है, दैट इज व्हाट योर क्लॉड. आपने सुना होगा क्लॉड का नाम, विच इज बाय एंट्रोपिक. आई थिंक आई होप यू हर्ड अबाउट इट. इट इज बाय द एंट्रोपिक कंपनी बेसिकली. So this Anthropic company is there. So they have this tool called as a Claude. Okay. Claude has so many features. Just like Chat GPT में, Chat GPT में एक section होता है where you can write your entire DAX. It's called as a DAX GPT. Okay. Claude में भी 3 to 2 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं. जैसे कि आपका क्लाउड कोड हो गया, क्लाउड वर्कस्पेस हो गया, ओके.
और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ओपन एआई मॉडल्स यूज होते हैं. सो ओपन एआई माइट बी नॉट कंफर्टेबल विथ यू राइट नाउ, आपको समझ में नहीं आएगा उतना. जस्ट आई एम टेलिंग यू फॉर द नॉलेज पर्पस. So in today's session, what we are going to do, we are integrating our Power BI, whatever the Power BI report that I have, that we are going to integrate with the Claude. Okay, Claude is our AI tool. Okay, I can say just like a GPT. Okay, so this is the thing. For now, हम पावर बीआई में क्या करते हैं? आई होप सबने पावर बीआई पढ़ा होगा, अभी अब तक तो पूरा सेशन खत्म हुआ होगा, राइट? कैन आई हैव सम क्वेश्चंस? गाइस, सबने पावर बीआई पढ़ा है अभी तक? Yes, from my end. यस, फ्रॉम एयर. एनी अदर? Just don't try to listen it like a Netflix. Okay, Yes, Netflix. yes, Yes, sir. So yes, sir. try to be make it interactive. It is very very important. And I'm telling you, and whatever the interviews I am taking right now, whoever the candidates and come, market has changed their lookout for the candidates. Okay, they don't simply ask you for Power BI. Power BI, just like don't think like that it's a reporting tool. You have to just drag the visual और डेटा अपलोड करना है उसमें, और उसमें विजुअल्स बनाना है, रिपोर्ट बनाना है. पावर बीआई भी उतना डेफिनेशन नहीं हुआ है. जब पावर बीआई न्यू न्यू था, दैट वाज इट्स डेफिनेशन, बट इट इज ग्रो मच मोर देन दैट एक्चुअली. ओके, तो इंटरव्यू में ये मत सोच के जाना कि सर ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो रहा है और ये नो, you will not get anything about this. Not a motivating thing or demotivating thing, but telling you the reality actually. You should have something bigger in your hand actually, or I can say some of the strongest point the other candidates cannot apply. Okay, that way. So you can tell this in like way, because in company ना आपको ऐसे ही चीजें करना होता है. Yes. So I think पावर बीआई जिसने पढ़ा होगा उसने सुना होगा ये सिमेंटिक मॉडल. किसी ने सुना है? चैट जीपीटी मत करना. सिमेंटिक मॉडल क्या है? दिस इज व्हाट इज सिमेंटिक मॉडल? यस गाइस, किसी को आइडिया? व्हाट इज सिमेंटिक मॉडल? ओके, so semantic model is nothing but like our Power BI data modeling. So in Power BI हमारे पास होता है एक मॉडल. Okay, just like if you go to the Power BI में एक होता है हमारा मॉडल व्यू. There are 5 views right now in Power BI. Okay, so report view, your table view, your model view. So this model view is very very important. Okay, so this model is nothing but what your semantic model, whatever the models you are going to do. Okay, तो इसको थोड़ा higher technical language में ना, it is called as a semantic model. Okay, nothing but the मॉडलिंग ऑफ फैक्ट एंड डायमेंशंस, डिम एंड फैक्ट. सो ये सबको पता होगा कि डिम में आपका द कॉन्टेक्चुअल डेटा है, अपने फैक्ट्स में आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है. सो इस मॉडल को क्या बोलते हैं? हम सिमेंटिक मॉडल बोलते हैं. तो सिमेंटिक मॉडल बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका ये जो इंडिविजुअल बना है, और एक होता है इंटरप्राइज लेवल पे. मतलब एक ही सिमेंटिक मॉडल बना देते हैं वहां पे फैक्ट और डायमेंशंस का, एंड देन इट विल यूज बाय सो मेनी पावर बीआई डेवलपर्स. ओके, बिकॉज उस तरीके से उसको डिजाइन किया होता है. राइट नाउ अब हम क्या करते हैं? बेसिकली एक्सेल फाइल लोड कर देते हैं पावर बीआई में. ओके, यू गो टू द एक्सेल्स में गए, आपने गेट डेटा किया, पावर बीआई फाइल्स ओपन की है, ठीक है. हार्डली इन इंडस्ट्री में एक्सेल्स यूज होता है, मतलब नॉट इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट अपलोडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू दैट वे. ओके, सो कंपनी में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट बीआई डेवलपर्स होते हैं. सो इफ बीआई डेवलपर इज वर्किंग ऑन अ वन वन प्रोजेक्ट में सेम डेटा मॉडल यूज करके दूसरे प्रोजेक्ट पे भी वर्क करता है, तो इट इज कॉल्ड एज इंटरप्राइज मॉडल. जस्ट लाइक यहाँ पे हम एक एक इंडिविजुअल मॉडलिंग देख रहे हैं. दिस इज द वन इंडिविजुअल मॉडलिंग. ओके, बट इंटरप्राइज में क्या होता है? एक अनदर टेक्नोलॉजी होती है दैट इज कॉल्ड एज ए टैबुलर मॉडल. ओके, अगर फ्यूचर में सेशन हुआ इसके रिलेटेड एनीथिंग तो आई जस्ट लेट यू नो गाइस. सो टैबुलर मॉडल होता है बेसिकली. तो टैबुलर मॉडल में हम एंटरप्राइज मॉडल बनाते हैं, एंड दैट एंटरप्राइज मॉडल वी गिव एक्सेस टू डिफरेंट डिफरेंट जो भी बीआई डेवलपर्स होते हैं उनको देते हैं. सो उसको हम बोलते हैं हम लाइव कनेक्शंस. ओके, आपने कभी सुना होगा लाइव कनेक्शंस के बारे में. आई होप यू ऑल नो अबाउट इट दैट मच. ओके, सो यस, सिमेंटिक मॉडल है. तो पावर बीआई में हमारा सिमेंटिक मॉडल एग्जिस्ट करता है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट क्लॉड इज गोना डू. ओके, क्लॉड क्या करता है? आपके पावर बीआई के सिमेंटिक मॉडल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है. ओके, सो जब भी हम क्लाउड यूज करेंगे पावर बीआई के साथ, ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पावर बीआई में जब भी हम क्लाउड इंटीग्रेट कर रहे हैं,
इट इज गोइंग टू गिव यू अ सिमेंटिक मॉडल, इट इज राइट योर डैक्स फॉर यू। ओके, आपका मॉडल ऑप्टिमाइज करेगा पूरा। ओके, जस्ट यू हैव टू टाइप इट। ओके, मुझे ये करना है पावर बीआई में, मुझे करके दो। वो आपके लिए सिमेंटिक मॉडल बना के देगा, रिलेशनशिप बिल्ड करा देगा पूरा अपनी। जो भी रिलेशनशिप है यहाँ पे बिल्ड करा देंगे, हम देखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल। ओके, रिलेशनशिप आपके बिल्ड कराएगा, डैक्स लिख के देगा आपको। ओके, ऑप्टिमाइज भी करके देगा आपकी जो भी डैक्स लिखे हैं आपने। ओके, देन like makes the folders. Okay, then clean the data. आप बोलेगे सर पावर क्वेरी है, व्हाट इज द नेसेसरी? तो देर इज अ डिफरेंस, लाइक जब भी कुछ बड़ा डेटा आ रहा है, इवन इफ पावर बीआई इज नॉट हैंडलिंग, हर बार थोड़ी ना जाओगे उसको क्लीन करते बैठोगे। जस्ट सिंपली टेल द क्लॉड क्लीन दिस डेटा, इट विल ऑटोमेटिकली डू, इट विल क्लीन द डेटा। ओके, मेजर्स के जो फोल्डर से फोल्डर बनाता है, कैलकुलेटेड कॉलम इट विल मेक। ओके, कैलकुलेटेड कॉलम्स। Okay, calculated columns it will make. Okay, and these are the things it will done by the cloud, and there are so many things actually. Okay, but one thing it doesn't do it, that is to make the report. Okay, it won't make the report. रिपोर्ट नहीं बनाएगा, रिपोर्ट आपको बनाना है। क्योंकि वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, किसको क्या चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, कौन से वेब फॉर्म चाहिए ना, दैट बिजनेस होल्डर्स विल डिफाइन यू, दैट क्लाउड इज नॉट गोइंग टू डिफाइन यू। यस, बट आपको टेक्निकली एज अ डेवलपर साइड से, ये डेवलपर साइड नहीं है आपका रिपोर्ट बनाना, आपका मेन जो पर्पज रहेगा, दैट इज व्हाट दिस वन, टू ऑप्टिमाइज द डैक्स क्रिएट करना है, आपका डेटा को क्लीन करना है, फोल्डर्स बनाने हैं, कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड रिलेशनशिप्स बिल्ड करनी है। ओके, देयर इज अ वन मोर टॉपिक आई मिस्ड इट, दैट इज अ रिलेशनशिप, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी। ओके, ब्रिज टेबल बनाना है आपको, कुछ सारी चीजें करनी है। सो दिस थिंग वी आर गोना डू इन दिस सेशन एक्चुअली, कि कैसे करता है ये सारी चीजें काम आपको। ओके, आई होप गाइस थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा आपको। Yes. या, so just make it interactive. Don't, again I am telling you, don't watch it like a Netflix and all. So yes, तो जब भी पावर बीआई को आपको क्लाउड के साथ इंस्टॉल सॉरी इंटीग्रेट करना है, one of the most important thing, okay, this is the diagram, I'll try to explain you. This is very, no more theory for more than 10 minutes now, for 5 minutes see the practical देखेंगे। see, power bi और fabric mcp server, this is very very important। okay, mcp servers actually multiple context protocols, actually it is the one of the client tool। ये बताता हूँ क्या होता है, मोटा मोटा शब्द इसको टेक्निकली क्लाइंट बोलते हैं, बट आई टेल यू। यूजर मींस आप क्या हो, यू आर द यूजर एक्चुअली। ओके, यूजर मींस आप, यू आर अ पावर बीआई डेवलपर, सो दिस इज यू एक्चुअली, द पावर बीआई डेवलपर, you are here, power bi pbi developer। okay, you are this guy, so this is the power bi developer, nothing but the your user। so you are sitting on your laptop, okay, right? now this is the power bi। सो यूजर से लेके पावर बीआई तक, दिस थिंग्स वी हैव टू डू, ये सारी चीजें करनी होती है हमें। फर्स्ट स्टेप इज दिस वन इज योर फर्स्ट। ओके, दिस इज योर, आई कैन से दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यस, इन हिंदी यस, ओके, इट्स नॉट मास्टर डेटा इज नाउ एक्सेल एंड पाइथन, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, योर होस्ट एप्लीकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट एप्लीकेशन? आपने सुना होगा, दैट इज द विजुअल स्टूडियो कोड। आपने सुना है कभी विजुअल स्टूडियो कोड, वीएस कोड? Yes. 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 तो होस्ट एप्लीकेशंस आर नथिंग बट वीएस कोड। ओके, एक एक बारे में बताता हूँ। लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज नथिंग बट व्हाट, अपना जो ओपन एपीआई वगैरह है, सारी चीजें, मतलब ओपन एपीआई में आपका चैट जीपीटी आ गया, आपका जो भी एआई टूल्स हैं आपके। सो दिस इज द सेकंड स्टेप, सॉरी दिस इज द थर्ड स्टेप। तो ये आपका हो गया, दिस इज योर वन, सो दिस इज योर वन, लेट मी कॉपी, दिस इज योर टू विच यू रिक्वायर। ओके, this is your third, that is your Claude opening, and nothing but the GPT, Chat GPT, Claude, or anything that is called as a LLM, large language model। Fourth step is your MCP server, this is very very important। okay, ये चीजें चाहिए हमें एक्चुअली जब भी हम डेवलप करते हैं। दिस इज योर फोर्थ, MCP सर्वर। MCP सर्वर इज नथिंग बट लाइक ना, आपका एक ब्रिज है, जैसे जस्ट लाइक सपोज आपको, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपके पास एक चैट जीपीटी है। ओके, जस्ट डोंट टेक अ चैट जीपीटी, ओके, सिंपल वे। ब्रिज का मीनिंग क्या होता है? एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट करना है। ओके, इफ बिटवीन समथिंग रिवर्स और देयर, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रिज एक्चुअली। यू नीड टू कनेक्ट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सेम वे, आपके पास जितने भी एक्सटर्नल टूल्स होते हैं, जस्ट लाइक पावर बीआई हो गया, यू हैव अ माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, आपका एक्सेल में डेटा है। ओके, कोई भी आपके टूल्स है, आई कैन से, ओके, लाइक गेटवेज, दैट्स गुड, इट्स या, कंप्लीटली। सो जो भी एक्सटर्नल टूल्स होते हैं हमारे, ओके,
सो उस एक्सटर्नल टूल्स को आपके किसी पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है। तो हियर माय एक्सटर्नल टूल इज पावर बीआई। मुझे पावर बीआई के साथ क्या करना है, एआई को कनेक्ट करना है। और एआई टूल्स क्या है मेरे पास, एक तो क्लॉड है, नहीं तो कोपायलट है, नहीं तो क्या है गूगल जेमिना है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक ब्रिज चाहिए। दैट ब्रिज इज नथिंग बट व्हाट, अवर एमसीपी सर्वर। ओके, इट इज लाइक अ क्लाइंट सर्वर टूल। ये आप अभी थोड़ा समझेगा नहीं आपको, बट आई लेट यू नो लाइक इन द फर्दर लेक्चर्स जब भी होंगे। एंड दिस इज अवर फिफ्थ थिंग। ओके, दिस इज अवर फिफ्थ थिंग विच इज नथिंग बट, कहाँ आपके आपको इसको इंटीग्रेट करना है। आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट विद द पावर बी आई। सो हमारा फोकस रहेगा, हमें क्या करना है, पावर बी आई को कनेक्ट करना है एमसीपी सर्वर, किस टूल, सॉरी किस एआई के साथ, क्लाउड के थ्रू। ओके, तो ये यूजर हो गया, नथिंग बट यू आर अ पावर बी आई डेवलपर। ये आपका पीबीआई डेवलपर आ गया यहाँ पे, ये आपका पीबीआई डेवलपर। ठीक है, पीबीआई डेवलपर। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पे, देन यू नीड सम होस्ट एप्लीकेशन। तो हम क्या यूज करेंगे होस्ट एप्लीकेशन में, विजुअल स्टूडियो कोड। आई कैन राइट इट एज अ वीएस स्टूडियो कोड। ओके, हम वीएस स्टूडियो कोड यूज करेंगे, दैट इज, या साहिल। Sir, the host application can be any ID, right? या एनी Like एनी आईडी, एनी आईडी, एनी आईडी। SSMS, can it be एसएसएमएस like? also, एसएसएमएस you cannot use until and unless you have a git integration with it. Ah, okay. Got it. Yeah, but right now for examples, even in industries also na, see if somebody is going for ssms and all na, then cost of that ssms and all na, it is huge actually. VS code don't have that much cost, and VS code is very easy to handle. But yeah, company have Azure environment na, then they will go definitely for that, right? Okay, Sahil. Then ठीक है. So any IDE you can use here, but I am using here Visual Studio Code, nothing but the host application. Then we are going to use here, it's called as a Claude. Claude AI we are going to use. Okay, it's very simple, easy guys. Okay, not that much nasty and all like thing. So then Claude AI, to integrate with the Claude AI, actually यहाँ पे हमारा, ये हमारा पावर बीआई है। ठीक है, दिस इज द पावर बीआई। क्लॉड को आपको कनेक्ट करना है। ओके, क्लॉड एआई को आपको कनेक्ट करना है पावर बीआई के साथ। यहाँ पे आपका पावर बीआई है एप्लीकेशन, यहाँ पे डेवलपर है आपका। ठीक है, ये पावर बीआई आपका एप्लीकेशन है। ओके, जो डेस्कटॉप है आपका, दिस वन डेस्कटॉप। ओके, इसको कनेक्ट करना है आपको। देन यू रिक्वायर्ड, ओके, वन थिंग दैट इज कॉल्ड एज अ एमसीपी सर्वर। ठीक है, यू रिक्वायर्ड। सो ये एक फ्लो होता है बेसिकली। सो पावर बीआई डेवलपर इज नथिंग बट व्हाट, योर यूजर। ओके, योर विजुअल स्टूडियो कोड इज नथिंग बट योर होस्ट एप्लीकेशन। क्लाउड एआई आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। एमसीपी सर्वर इज योर अगेन द व्हाटएवर द सर्विस यू आर गोइंग टू, एंड एक्सटर्नल टूल्स, ये सारे एक्सटर्नल टूल्स है, दैट इज नथिंग बट द पीबीआई एप्लीकेशंस। ओके, कोई भी हो सकता है, टैबल्यू हो सकता है, आपको कुछ कोई भी चीजें हो सकती है। नाउ ठीक है, लेट्स सी दिस इज एज अ प्रैक्टिकल. So first thing, what we are going to do, okay, it's very very important. Okay, आपको क्या क्या चाहिए ना, क्लॉड एआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग. So guys, I think it is recorded. Okay, like I can see, because see, when you are integrating your cloud with the power BI, 2 to 3 times you have to restart your laptop. Okay, so for this session, please pay attention again, hear it actually, and do it by yourself also practically. Okay, that's a very important, otherwise you will lose everything, means you won't get into that things. Okay, anyway, you have chat gpts and all, but still. So what applications we require to do this thing? Okay, क्या क्या चाहिए होता है हमें, क्लाउड एआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आप इंटरनेट में जाओगे ना, सीधा डाल दोगे क्लाउड डेस्कटॉप फॉर विंडोज। Okay, if I go here, I already have installed, but still just for Claude AI desktop for window. Okay, okay, install Claude desktop. Okay, और यहाँ पे है डाउनलोड फॉर विंडोज। आई एम नॉट गोना डाउनलोड। ओके, इट इज गोइंग टू डाउनलोड, आई लेट मी स्टॉप इट। सो आप जैसे ही डाउनलोड करोगे ना, सी यू विल गेट टू नो दिस क्लॉड एक्चुअली। सो आपका क्लॉड है यहाँ पे, सो दिस क्लॉड ऐप एक्चुअली। सो ये आपको इंस्टॉल करना है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, अनदर थिंग, वंस यू इंस्टॉल, उसको लॉग इन कर लीजिए आपके जीमेल के साथ। ओके, या फिर कोई भी ईमेल एड्रेस वगैरह है आपका, सिंपल करना है आपको उसको।
another tool we required, that is a Visual Studio Code, VS Code. Okay, Visual Studio Code. So this is the Visual Studio Code, basically one of the IDE. Okay, simple है, सेम आपके गूगल पे जाएंगे और VS Code you can type it actually. Okay, third thing, I think you all guys have Power BI application. Okay, this is the Power BI application. So these things we require as on, like हमें क्या चाहिए ऑन एप्लीकेशंस लेवल पे, और जो भी टूल्स लेवल पे हमें क्या क्या चाहिए, एक हमारा क्लाउड या डेस्कटॉप चाहिए एप्लीकेशन जो मैंने इंस्टॉल करके रखा है, देन VS कोड, दिस इज द VS कोड रिक्वायर्ड, और पावर BI एप्लीकेशन जो हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। आई होप किसी को डाउट नहीं है अभी तक यहाँ तक। सर या ये क्लाउड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए जो विजुअल कोड है इसकी क्या प्रायोरिटी रहता है सो क्लाउड के लिए, इसका थोड़ा ब्रीफ देंगे प्लीज। नहीं नहीं, प्रायोरिटी इन द सेंस आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, ये जो विजुअल कोड है इसकी क्या हाँ प्रायोरिटी, क्या भूमिका रहता है, मतलब इससे कनेक्ट होने के क्या क्या रीजन होते हैं और क्यों कनेक्ट हम करते हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा जानना है सर, ब्रीफ। हाँ, यस श्योर, मैं आपको लाइक आफ्टर द सेशन और नॉट आफ्टर द सेशन, एंड ऑफ द सेशन में बता दूं, चलेगा आपको? दैट राइट? ओके सर, थैंक या यू। या सो गाइस, किसी को और क्वेश्चन है थोड़े टिल नाउ? जो भी हो, लाइक मेक इट फ्रैंकली कंप्लीट। नॉट येट? ओके। सर मेरे पास मैकबुक है, पावर बीआई मैकबुक इंस्टॉल नहीं हो रहा है। अरे वो आपको वर्जन चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। इसका मैंने वर्जन्स होते हैं, CMD फाइल्स की वर्जन्स होती है, आपको देखना पड़ेगा वो। तो कोई आ, लिंक मिलता तो ठीक है, मैं मैं डाल देता हूँ एक बार, मैं देखता हूँ, मैं मेरे पास रहेगा एक्चुअली, मेरा मैक पे ही काम होता है, सो लेट जस्ट। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस गाइस रिलेटेड टू अप टू दिस नाउ? नॉट येट? ओके कूल। सो ये एप्लीकेशन चाहिए हमें। सो नाउ वी विल सी स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली। तो क्लॉड हमने इंस्टॉल कर दिया, सो स्टेप वन, जस्ट यू नीड टू ओपन द क्लॉड। ओके, क्लॉड को ओपन कर दो। ओके, सो यूर जो भी क्लॉड डेस्कटॉप है, आपने लॉगिन वगैरह कर दिया, क्लॉड को ओपन करना है। वंस यू ओपन द क्लॉड, इट विल लुक लाइक दिस एक्चुअली। Okay, this is your cloud application. So in cloud application, what first thing you have to do, once you open, just go to the, whatever the name is here, just click on this name. Okay, go to the setting, and once you go to the settings, okay, there is an option called developer. Okay, so let me write it down. Okay, just click on your profile, click on profile. Okay, then once you click on the profile, okay, go to the setting. If you want, you can write it, guys, this. Okay, so click on the setting, and in setting, go to the developer. Okay, so go to the developer. So once you हैं click on that, hey, गाड़ी hello, की चाबी। hello, okay, David. So once you go to the developer, guys, so you will see, you won't see this option actually. Okay, this option you are not gonna see. क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यों करके रखा है? Why? Because I have to restart the laptop again to connect with the again MCP. So best way कि मैंने सोचा कि इसको रिकॉर्ड कर दो, आप फिर से देख लो इसको, अभी भी पे अटेंशन कर सकते हो अगर आपके पास ये एक्स्ट्रा लैपटॉप। ठीक है, सो अब जैसे ही डेवलपर पे क्लिक करेंगे ना, लोकल MCP सर्वर्स, सो यहाँ पे सिर्फ एडिट कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा आपको, ये नहीं दिखेगा, ये चीज नहीं दिखेगी आपको यहाँ पे। ओके, यू आर गोना सी ओनली एडिट कॉन्फ़िगरेशन। जब आप एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करते हो, वंस यू क्लिक ऑन द एडिट कॉन्फ़िगरेशन, ओके, देन इट विल ओपन दिस फाइल एक्चुअली, दिस आर द फाइल। ओके, और इसको आपको देखना है क्लॉड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन, ये वाली फाइल होती है आपकी। ओके, दिस इज अ सिंपल थिंग। एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है आपको। वंस यू क्लिक ऑन एडिट कॉन्फ़िगरेशन, आपको मिलेगा यहाँ पे क्लॉड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसन, ये जेसन फॉर्मेट में लिखा होता है आपका। ठीक है, ये सारे उसके जितने भी इंस्टॉल्स होते हैं ना एप्लीकेशंस, उसके सारे कैशेस वगैरह होते हैं। तो जैसे क्लिक करोगे आपको मिलेगा क्लॉड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ अगेन कम बैक टू अवर whatever the plot we have. Okay, just main window पे आना है, मैं बता दूँ सारी चीजें। Now move towards the Visual Studio. आप जैसे Visual Studio में आएंगे, okay, so once you open the Visual Studio, okay, so in Visual Studio just go for the extensions. Okay, this is the extension tab. So once you click on extension, in extension में आपको क्या करना है, सर्च करना है Power BI MCP. It will take time. See, Power BI modeling MCP server, this is the thing. ओके, जो हमारा क्या रहेगा, क्लाइंट टूल, और आई कैन से द, मैंने बताया था ना आपको, बेसिकली हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे टू कनेक्ट द पावर BI
विथ क्लॉड। क्लॉड को हमें पावर बीआई के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके बीच में एक ब्रिज रहेगा। दैट ब्रिज इज नथिंग बट व्हाट, योर एमसीपी सर्वर। व्हाट सिंपली यू हैव टू डू, यहाँ पे अनइंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे। ओके, सो जस्ट ट्राई टू इंस्टॉल इट हियर कंप्लीटली। आई होप यू आर गाइज फॉलोइंग मी, राइट? किसी को डाउट है कुछ थोड़ा? No, sir. हेलो? Yes. डाउट है? क्या डाउट है? No, sir. अच्छा, नहीं है। ओके, ठीक है। सो दिस सेकंड थिंग, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड द पावर बीआई एमसीपी। सो आपने स्टेप 1 में ये डेवलपर कर दिया। डेवलपर के बाद स्टेप 2 में क्या करें आपने? सो स्टेप 2, ओपन द विजुअल स्टूडियो। आप विजुअल स्टूडियो में जाएंगे। 1 मिनट है बस। सो विजुअल स्टूडियो ओपन करना है आपको। विजुअल स्टूडियो में आपको जाना है एक्सटेंशंस में। ओके, वंस यू गो टू द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में आपको डालना है पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी सर्वर। दिस इज द थिंग। ओके, सो दिस इज द थिंग यू हैव टू पुट। आपने जैसे ये पुट कर लिया, स्टेप 3। ओके, एमसीपी सर्वर आपको इंस्टॉल करना है। वंस यू डन द एमसीपी, एमसीपी जो भी सर्वर आपने इंस्टॉल कर दिया है, अगेन गो टू द क्लाउड। ओके, क्लाउड को जाना है, अगेन गो टू द सेटिंग। आपके सेटिंग में डेवलपर सेटिंग में जाना है और यहाँ पे एडिट कन्फ्यूग करना है। जैसे आप एडिट कन्फ्यूग पे क्लिक करेंगे, इट विल मूव यू टू द क्लाउड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करके ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड, इसको ओपन करना है। अभी कोड थोड़ा अलग दिखेगा मेरा, दिस इज द कोड एक्चुअली, यू डोंट हैव टू राइट दिस कोड एक्चुअली। ओके, बट जैसे आप उसको ओपन करोगे ना, आपको सिर्फ इतना ही कोड दिखेगा, ये नीचे वाला नहीं दिखेगा। ओके, ये वाला दिखेगा सिर्फ, दिस मच। एमसीपी सर्वर्स, पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी कमांड, कहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो कहाँ पे है? एग्स, बेसिकली पाइथन के फंक्शंस थोड़े डालने हैं बेसिकली इन द लूप में, एंड इन्वायरमेंट। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे ना, वो जो फाइल दिए है मैंने आपको, या फिर सॉरी जो एमसीपी सर्वर में व्हाटएवर द फाइल्स वी हैव, वंस यू ओपन इट, यू विल गोना सी ओनली दिस मच कोड। ओके, दिस इज द कोड ओनली, यू आर नॉट गोइंग टू सी दिस मच अमाउंट ऑफ कोड। ओके, अब इस कोड में क्या करना है ना, you need to do some changes. Okay, I'll put it in a chat, that code. Okay, so this is the code actually I have written. I'll put it in a chat. So where is the chat box here? This is the chat. Yes, you can learn everything, Sumit. So please just try to take this code and copy paste somewhere else. Okay, you are like, you are going to use it for whenever you are developing the this MCP server things. Okay, so yeah. जैसे आपने कोड इंस्टॉल कर दिया ना, यहाँ पे सॉरी पेस्ट कर दिया ना सीधा, ओनली जस्ट मेक श्योर ये जो पाथ है ना आपका यहाँ पे, दिस पाथ शुड बी योर्स। तो इस पाथ को कहाँ से लेंगे आप, लाइक आपको कहाँ से मिलेगा ये पाथ? तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट गो टू द फाइल। ओके, आप फाइल में जाएंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए, डोंट सी माई मेसी डेटा। ओके, क्लिक ऑन दिस, गो टू द होम टैब। सो होम टैब पे आपको क्या करना है, सिंपली यू जस्ट नीड टू, ये इसको डाल देंगे बेसिकली, आपके जो भी कोड कमांड वगैरह होते हैं ना, इसको इंटर करना है। सर सो आप मेरे में जैसे, ऐसे मैंने आपको सॉरी, स्क्रीनशॉट है। ओके, चेक इट प्लीज। या जस्ट 1 मिनट। ओके सर, एक्सप्लेन आफ्टर एडिट कॉन्फ़िगरेशन, गॉट इट, ठीक है, डाउनलोड होता है। व्हाट इज द एरर डिड यू गॉट? क्या एरर है? इलेक्ट्रॉन क्वाइटेक्स प्रोसेस इलेक्ट्रॉन, किसका ये क्या है, मतलब किस चीज का एरर भेज रहा है आप मुझे? जो आपने बोला था ना। हाँ, आप मैक यूज कर रहे हैं क्या? यस सर, मैकबुक है। हाँ, मैक के लिए थोड़ा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, मैक को मत देना थोड़ा, अभी विंडोज के लिए बता रहा हूँ मैं। ओके। या
यस, या किसी को कुछ डाउट है अभी स्टेप्स में? जस्ट प्लीज बी फ्री कंप्लीटली। ठीक है, सर, तो बात कहाँ या एक बार वो रिपीट करोगे क्या, जेसन फाइल का जो कोड है ना, हम्म। वहां से? ओके श्योर, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था जेसन फाइल कहाँ से मिलेगी, एडिट कन्फिग पे आपको क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन एडिट कन्फिग, ओके, तो आपको यहाँ पे सीधा वो फाइल पे लेके जाएगा, क्लॉड अंडरस्कोर डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन। तो इस पे आप जैसे राइट क्लिक करोगे, इट विल टेल यू टू ओपन द फाइल, सो जस्ट ओपन विद विजुअल स्टूडियो ओनली। ओके, सो विजुअल स्टूडियो के साथ जब आप ओपन करोगे उसको, यू विल गेट द फाइल लाइक दिस। ये इतना ही मिलेगा कोड आपको, बस ये वाला कोड मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यू आर नॉट गोना टेक दिस कोड इंटायरली, ये आपको यही कोड मिलेगा आपको। समझे इतना? दिस इज द स्टेप थर्ड एक्चुअली। आई होप इतना समझ हो गया आपको सुमित। यस सर। या कैन यू और प्लीज फिर शेयर दिस? या वो जो लोकेशन है वो चेंज करना है ना उसमें कमांड में, तो? हाँ, वो लोकेशन मैं बता रहा हूँ अभी। सो ओके। आपको ये कमांड जो है, ये लोकेशन है आपका जो भी सर्वर का, इसको चेंज करना है। इट इज माई लोकेशन, नाउ यू हैव टू चेंज इट टू योर लोकेशन। तो जस्ट सिंपली टाइप इट हियर। जब आप होम में जाओगे, लेट्स गो टू द होम, और यहाँ मैंने कमांड डाला है, वो इट इज सिंपली कमांड एक्चुअली गाइस, मतलब फाइंड करने के लिए फाइल पाथ। तो वंस यू पुट दैट कमांड, आई पुट इट इन a chatbot. It's where is it is where it is where it is. So just let me put this in chatbot. Okay. सो इसमें आप जब जाओगे, नाउ यू विल गोना सी दिस टैब, एनालिसिस सर्विस पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी। सो इस पे क्लिक करना है आपको, एंड देन गो टू द सर्वर। ओके, सो लेट मी राइट डाउन। सो स्टेप 3, यू हैव टू यूज दिस कमांड। ओके, सो इस कमांड में आपको क्या करना है, वंस यू गो टू दिस कमांड, नाउ गो टू द फाइल पावर बीआई। ये वाली ओपन है, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ये वाली फाइल रहेगी आपकी, ये फाइल में जाना है आपको। ठीक है, वंस यू गो टू दिस फाइल, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप आपकी रहेगी, ये फोल्डर पे क्लिक जब करेंगे आप, देन गो टू द सर्वर। आपको सर्वर में जाने के बाद आपको क्लिक करना है पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी, ये आपको दिखेगा। इस पे क्या करना है आपको? ओके, जस्ट पुट इट हियर, पावर बीआई मॉडलिंग, लेट मी कॉपी दिस गाइस। बीआई मॉडलिंग एमसीपी, ठीक है, इस पे जाएंगे। अब क्या करना है, इसको कॉपी एज अ पाथ। इस पे लेफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी एज अ पाथ। जब आप कॉपी एज अ पाथ करोगे ना, आपको आपका पाथ मिल जाएगा। सो जस्ट पुट इट इन नोट पैड, से आपको पाथ मिलेगा यहाँ पे, ये वाला पाथ है। ठीक है, सो ये पाथ क्या करना है आपको, विजुअल स्टूडियो में जाना है, और जो आपको यहाँ पे कोड है ना, मैंने जो कोड दिया है एज इट इज उसको पेस्ट करना है। आपके पास वहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई भी कोड आ गया ना, उसको सीधा डिलीट कर दीजिए। जब आप एडिट कन्फिग पे जाओगे ना, ओपन करोगे फाइल, उसको डिलीट करिए और ये सीधा कोड डाल दीजिए वहां पे। एक्सेप्ट ये वाला लिंक मत डालना, मेरा वाला। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना है कोड आपको, और सीधा पेस्ट कर देना है। और इसकी जगह आपको आपका जो पाथ है ना, पाथ दिया था मैंने, वो पाथ आपको पेस्ट करना है आपको यहाँ पे, जो भी आपका जहाँ पे फोल्डर आपको ओपन रहेगा, या फिर कोई भी लैपटॉप होगा, कोई भी डोमेन होगा, आपकी इंडस्ट्री होगी। ठीक है, और इसको क्या करना है आपको, फाइल, गो टू फाइल एंड सेव। ओके, मल्टीपल टाइम सेव कर देना है इसको, लाइक यू नीड टू डू इट मल्टी समटाइम, ये ना ब्रूटल वे से बिहेव करता है। ठीक है, सर, so इसको, या यस, सर, मैंने जब वो एडिट कॉन्फ़िग किया ना, तो हाँ। वहां पे ऑलरेडी वो प्रेफरेंसेस वाला कोड था। तो वो हटा दूं या तो? नहीं, पोर्ट में कौन सा दिखा रहा है आपको, वो फाटा दो पोर्ट आप एक्चुअली, अदरवाइज क्या होगा ना, बाद में जेसन एरर करके आता है। सो दैट इज द, मतलब कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा उसका, उसको हटा दो पोर्ट को। ओके। यस, ठीक है। तो जैसे ही आप इतना कोड डालोगे ना, ये नीचे वाला मत देखना, आपको ये कोड टाइप करना है पूरा का पूरा, मैंने चैट में डाल दिया है।
एंड जस्ट रिप्लेस हियर, जो भी आपका पाथ है उसको रिप्लेस कर दो, एंड देन फाइल एज अ सेव सेव सेव। ठीक है, 3 या 3 4 बार सेव कर दो, कभी भी सेव नहीं होता है प्रॉपरली। जैसे सेव हो गया, अगेन गो टू द क्लॉड, क्लॉड पे जाना है आपको। एडिट कन्फ्यूग में ना आपको ये विंडो दिखेगा ऐसा। ओके, पहली बार में नहीं दिखेगा आपको ये, वहां पे वो आपको फिर ही बताएगा, एडिट कॉन्फ़िग ही बताएगा आपको। इट्स नॉट गोना शो यू लाइक पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी, ये ऐसा विंडो नहीं दिखाएगा आपको वो। मैं क्यों नहीं दिखा रहा हूँ गाइस, बिकॉज मुझे अगेन मेरे को भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा लैपटॉप, एंड अवर वट एवर द सेशंस भी है ना, स्टक हो जाएगा बीच में। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो क्या करना है आपको इस केस में, रिस्टार्ट करना है आपके लैपटॉप को, एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। फिर से क्या करना है, क्लाउड को ओपन करना है, डेवलपर में जाना है, और चेक करना है कि ये विंडो दिख रहा है क्या मुझे। अगर ये विंडो फिर से नहीं दिख रहा है, अगेन रिस्टार्ट योर लैपटॉप। 2 टाइम्स तो रिस्टार्ट करना ही पड़ता है, किसी किसी का 1 टाइम में आ जाता है, बट आई एम टेलिंग यू एक्चुअली, अगर कोड भी कुछ गलत हो गया, स्पेस ज्यादा आ गई तो वगैरह पूरा। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये फाइल सेव कर दिया, ओके, तो आपको ना ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना है, वो जो भी फाइल आपने विजुअल कोड में लिखा था ना, ये वाला फाइल, ठीक है, सॉरी नॉट दिस वन ना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपअप होता है विद दिस पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी कमांड। ये आपका पाथ रहेगा, कंप्लीटली इस पाथ से ले रहा हूं मैं, आर्गुमेंट स्टार्ट। ओके, तो ये दिखेगा आपको, जैसे ही आपको ये बेसिकली आपको दिखा, लाइक वेन एवर यू विल सी दिस मैसेज इनटू द, whenever you see this command, it means you have successfully connected, आपका जो भी क्लॉड है ना, आपने क्लॉड को कनेक्ट कर दिया पावर बीआई के साथ। आई होप गाइस थोड़ा बहुत समझ में आ गया। हेलो, यस सर। या किसी को डाउट है अभी तक कुछ? थोड़े स्टेप्स है, लाइक एनीवन कैन डू दिस। ओके, मैं थोड़ा उतना डीप में, सॉरी नॉट इन कॉम्प्लेक्स में आपको बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल वे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। So सो दिस इज basically, हाँ, sorry to interrupt in between. So basically, या I'm just wondering, like, can we get this all these steps that you are going through? So या basically, that would help us yeah, for. I will document it, and I'll give it to you on WhatsApp, or I can provide it to Vaishnavi or Ashish. Yep, definitely. Thank you. Yeah, definitely. Yeah, okay, cool. Thanks. Now, our whatever the setup that we have did, it is completely, properly organized now. So see, we have Power BI developer, like we are a developer. We have installed Visual Studio Code. Then we have installed Claude AI. Okay, Claude App Desktop Application. We have MCP Server. MCP Server we have installed through Visual Studio Code. Okay, this MCP Server. If I go to here, go to the extensions. In extension, you can find it Power BI Modeling MCP Server. Okay, you can go it here, and we have Power BI app, that is our desktop application. So these things we have done. Okay, I will give you each and every steps documented format to Vaishnavi, the HR, or like in the Ashish. So this is entirely set up. Yeah. Yes. Yes. Somebody has a question. Okay, got it. Okay, now let's try this AI tool with the Power BI. So to work with the Claude, first thing what you require a Power BI file. I have already file, and the file must be open. It should not be closed. Like Power BI close नहीं होना चाहिए। जिस भी फाइल पे आपको whatever file you are going to work, or whatever the file you have Power BI file, on that file if you are going to work, that must be open actually। तो मेरे पास ये फाइल है actually, project underscore mine। Okay, yeah, I will send you. So project mine is my file name actually, okay, that I have developed right now, okay, and I have opened it in our Power BI desktop application. At the same time, I have a Claude also, which is a configure. How we can say it is a configure? Just go to the like my profile, go to the setting. In developer, you will see this window. It means it is properly set up right now. Okay. Now go to the chat. Okay. So now tell him connect with, okay, what is the Power BI file name? Project mine. Connect with project, sorry, connect with Power BI file project mine. Okay, so just enter. I have reached the limit, guys, but still, let's see. Okay, it is already connected. I think I have done it over. Oh, okay, yeah. See, I already like already connected here. Connect with my file Power BI test Power BI. It is not that fine. See this one. Connect with my Power BI file project mine. So it will check first of all. I have the Power BI MCP tool available. Let me load into connect your semantic model. Okay, good. The Power BI file tools are loaded. So ये उसने बताया, like it's basically done by the your Claude actually. And then he saw, okay, I can see your project mine Power BI is open. So very important,
whenever you are using Claude, Power BI file should be open. Okay, if it is not open, then it is not gonna work. Okay, now let me connect now. Once it is connect now, it will show you what is the file name, what is the status, model type, tabular. In future, I will tell you what is tabular. In industry, it is completely used. Once you go to the MNCs, guys, I'm telling you, don't think like Power BI has to use for report building. No, Power BI is grown much more now. They will ask you for DAX editor. They will ask you for ALM lifecycle managements. Okay. And they will ask you for your semantic model. That is nothing but the enterprise tabular model. Okay. So this very many, it will tell you the compatibility level. What is the size of that model? I have a big size model actually right now here. So if you can see this, this is my model now. Okay, this is the data model, which will use the 3-fact tables, and it is more than 2 billions of data. Sorry, 20 millions of data. And last process on April 9 right now. So it is asking me, what would you like to do with this file? For example, I can explore the table. So let me give him like how many tables are present. So just see how many tables are present. So it is loading now. See, it will give you the step-by-step operations. Loading. Okay. Let me use a DAX query to list all the table in the model. How many tables we have right now? Just check. See, it is giving me the project mine has 14 tables, 12 visible, 2 hidden. And that I by default I have done actually. Okay. So 3-fact table. I didn't tell him like this is the fact or what, but it's automatically detected. So these are the fact, sales fact, monthly fact forecast, and these are the dimensions table and other reference table that I have generated. Okay, guys, if you have this model also, like any data model you have, or you have a semantic model, just try to connect with it. Okay, and we have a hidden system tables also. So it gives me the tables also. Yes. Okay. Vaishnavi, I think we are recording the video, right? Hi Akash, yeah, recording Yeah. is on. So we'll Yeah. share the recording and respective Okay. notes to the candidates. Sure, sure. To learners, like please focus on the live lecture. You will get the notes and recording by the end. Okay? Yeah. Okay, got it. Thanks, Vaishnavi. So yes, it is telling me all these things. Now, what I want to do now, sometimes, we are so much bored and, like you don't want to work on this relationship part. What I want now, I want Claude to do the relationships also. Okay. Generally so what I will do, I will just delete these all relationships. I will go to manage relationships in my Power BI. I'll select all the relationships and I just delete it. We just delete it. It's my old file actually. Let's see now. So working on it, I have deleted all the relationship close. So this is my, it's not a semantic model. It's just I have loaded the tables. Just like you also see in your data modeling. Whenever you load the table, you will see such a kind of things like that. Now I'm going to Claude. I'm telling you, okay, now create the relationship between them. Okay, let's see. Let me first check the existing relationship and understand the table structure. Okay, now it is checking all these things. What is doing? Would I can see ये वो बोलेगा ही आपको 20 है मैंने डिलीट किया है ना वो रिफ्रेश नहीं है बट स्टिल it is going to do the relationships and all. Let's see. Now I have a complete picture. I can see the column date clearly. Let me analyze and fix the 2 broken relationships and create any missing ones. It is checking for all these things and all. Not yet. Actually मेरा updated file नहीं है, but let's see होता है क्या. It seems that the model was refreshed and more relationships were dropped. Only 6 remain, all 2 hidden local dates. I need to create all the proper relationship from scratch. Let me build them all once. So let's see what it is doing. So we have a lot of models here, guys. Sonnet is there, Haku is there, Haiku AI. We know all about these things. More models. See, Sonnet, Haiku, Opus 4.6. But it will require some amount of money. I think per month they will charge you around 1400 to 1600 to Claude subscription. So yeah, all relationships are created. Let me go to the Power BI now. See, all relationships are created. Just refresh it. Whatever the changes you are going to give it to the Claude, it will reflect here, but every time you have to refresh. Okay, one or more calculator option need to be manually refreshed. So you just need to refresh. Now see,
Previously, we have deleted all the relationship. Right now, it is created again relationships, and it is at the utmost, accuracy, basically customer code to customer code. Okay. And can anybody tell me what kind of schema is this? Galaxy schema. Galaxy schema. Galaxy. Galaxy schema. Galaxy. What is the Galaxy Galaxy schema. schema? Sir, Snowflake. Fact tables. Sorry? They contain 2 or more fact tables, sir. No, it's not like that. Galaxy schema Sir, has it's Snowflake. yeah, right. It's a Snowflake schema. Snowflake with the star schema. In company, usually you don't have a one fact table. In company, most probably you have either a star schema or snow. Galaxy is not much more, I can say 2% only use if it is a big project, which will use in enterprise models. But for, most probably industry, you have a star schema with multiple fact tables, not a single fact table. I'm telling you, multiple fact table. So even if you go to industry and interviewer ask you, so how did you created a star schema? Okay, and how many fact tables were there? Don't try to, tell them we have a one fact table. He will definitely catch you. Always have this, composition like we have 3 to 4 fact tables. Industries used to be work like that. Industry में 2 या 3 से भी बड़े fact tables होते हैं. ओके, आप बोलोगे सर एक ही फैक्ट बना दो ना सारे फैक्ट को ये करके मर्ज अप करके, वैसे भी नहीं होता. डेटा साइज मॉडल वगैरह बढ़ जाते हैं सारी चीजें. तो सेम चीज होता है कि आपको प्रॉपरली वे में, तो कंपनी में ये याद रखना, इंडस्ट्री में मोर देन 1 to 2 फैक्ट टेबल्स होते हैं, आपके डायमेंशन टेबल्स होते हैं, और डायमेंशन के भी डायमेंशन टेबल होते हैं. अब मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछूंगा, अगर मुझे एक फैक्ट टेबल दूसरे फैक्ट टेबल से कनेक्ट करना है, हाउ आई कैन डू दैट? पॉसिबल है, कर सकते हैं हम? I फैक्ट टू guess फैक्ट, many to many relationship. मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, बट is it Not feasible sure. or not? No, that's okay. Many to many No, relationship, it will be. no, Huh. it's not feasible. I guess ambiguity is created in the report view. What kind of ambiguities? और कैसे क्रिएट होगी वो, क्या देगा वो? बेसिकली एम्बिगिटी आप बोलोगे इन इंटरव्यू रिजल्ट विल आस्क यू. प्रॉपर नहीं है, ओके, प्रॉपर नहीं आता है रिपोर्ट व्यू में. राइट. ओके, एनीबॉडी एल्स, एनीवन, कोई बताएगा? और मे बी सर वी कैन राइट द डैक्स फॉर दैट आल्सो. नहीं, मेनी टू मेनी के लिए तो डैक्स प्रेफर ही नहीं करते. आई होप आपने सुना होगा ब्रिज टेबल. किसी ने सुना है? गाइस, नेटफ्लिक्स की मरा मत देखो. लाइक सर, कैन यू आस्क दिस क्वेश्चंस इन इंग्लिश only. Very nice, good Akshay. Yeah, we can create a bridge table in between, but how to create a bridge table then? How did we create the bridge table? No डेटा problem, guys. मॉडलिंग करके हो सकता है यार, हाँ, डेटा मॉडलिंग करके. वो तो हो गया, डेटा मॉडलिंग हम कर रहे हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे ब्रिज टेबल? कैसे बनाएंगे? सर, एक डिमेंशन टेबल डाल के. डिमेंशन टेबल? You can add, sir, one dimension table. ओके, अक्षय हैज अ नाइस आंसर. लाइक फॉरेन कीज को हमें ये करना है. Another thing also, what we can do, we can use the values functionality to remove the duplicates. ये थोड़ा क्वेश्चन करके जाना गाइस, मैं 100% लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको इंटरव्यू मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज आई एम आल्सो टेकिंग द इंटरव्यू. आई नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट. ठीक है, नो प्रॉब्लम. बट या, इंडस्ट्री में जस्ट कीप इन माइंड, आई होप पूछे. ओके. ओके अक्षय, नो प्रॉब्लम. I hope they, because as an interview I always ask, because this is the real industry scenario. और यही होता है, काम करना होता है आपको. स्नोफ्लेक विद ब्रिज टेबल. ओके, मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है गाइस, नो प्रॉब्लम. सो क्लाउड को मैंने ये बता दिया है, ठीक है, एंड इसने बता भी दिया मैंने रिलेशनशिप कितने क्रिएट हो गए. मैंने फैक्ट सेल्स को इसने जोड़ा है डीम डेट के साथ, ठीक है, देन डीम कस्टमर को, डीम प्रोडक्ट्स को. ओके, योर मॉडल नाउ हैज द स्टार स्कीमा स्ट्रक्चर विद ऑल फैक्ट टेबल्स. ओके, स्टार स्ट्रक्चर. This, can anybody mute? So this is the one star structure actually. Okay,
but one snowflake schema it is not going to detect. It will detect once we have to train it properly, because यहाँ पे हमने क्या किया है ना, एक schema भी join किया है मैंने, यहाँ पे टेबल गायब हो गया है क्या, customer code, like here is a market to market I have joined here, so it is nothing but the snowflake actually, market को drill down करेगा region wise. ठीक है, now I will tell him, let me go to the report view. Okay, I have so many things to do. I will tell him to create, suppose I have a manufacturing cost and I have suppose a fiscal year. Okay, let me create it to the matrix, not matrix. I can go to the table and I will add the manufacturing cost. So what I want to create a DAX, okay, which will give me the 2018 of only 2018 fiscal years manufacturing cost. What I will do, I will tell him calculate manufacturing cost, manufacturing cost for the, okay, calculate manufacturing cost for the fiscal year 2018. Okay, guys, am I audible? Yes, sir. Okay. Create a measure. Okay, it will create. Yeah, Vaishnavi, am I audible, Vaishnavi? Yes, sir. आप Yeah, Yeah, you're audible. okay, audible, Akash. okay, thanks. So, okay, this is the measure giving me. Now, what I want now, I want to tell him create a measure which will calculate. Okay, I think my internet was dropped, that's why. Which will calculate the manufacturing amount. Give the proper prompt, guys. Okay, we should calculate the manufacturing amount fiscal for the fiscal year 2018. Okay. So it is created this. Let me go to the Power BI. Does it created or what? Okay, this is the cost metric. I have told him. See, these are the measures he has created. Okay, so उसने मैंने बोला था उसको folder भी now करेगी cost metric. So let me go in here, check this. Go to the KPI. What is this? 4.35. 4.35. Okay, so it has created the DAX also. See, these are the DAX. Okay. So these are the calculated columns, guys. Okay, and the measures also. So it has created all these things. Okay, sum X, total manufacturing cost. Okay, so these things it can do the Claude actually. Whatever you want actually. You wanted to, create relationships again, break it. Okay, you want to clean the data also. Jo bhi hai sare, you can give it to the Claude actually. Okay, these kind of things you can do with the Claude.
आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा इसको, राइट गाइस? Yes, sir. मैंने इसको थोड़ा Yes, छोटा sir. कर दिया। टिल नाउ एनी क्वेश्चंस? So far there is no question from my end. Okay, got it. No worries. Anything else? Any from non-tech also? They can also, like, non-tech, don't worry about this actually. Those who are from commerce or arts backgrounds also. It is very easy tool to learn actually. But please guys, now take out that, whatever the thinking that you have, like Power BI uses for right now report purpose. No, Power BI is much more than right now. So it is include the Fabric also, Microsoft Fabric. It will include Tabular data model, your ALM, application lifecycle management, your cloud integration, Copilot integration, and more than that, it is completely now moving into data engineering field completely, slowly, slowly, slowly. So Power BI is not a one like a reporting tool. It is like entirely one package of data engineering where you can do all kind of things completely on enterprise level. Okay, that's the thing. So these are the steps like how we can integrate. Okay, so even it will tell you like how many columns are there. You can ask him so many questions. You have to train him actually. Okay, so it will give you a lot of questions basically like kitna cost hai, or you can tell him what is the year on year growth. Okay, write a measure to calculate year on time intelligence function. Okay, so you can tell him write a measure to calculate year over year growth. Okay, so it will create the measure. Just let's see. Let me move this side. Let's see if it is. So you need to write proper, write a DAX and including Power BI. सर प्लीज स्पीक हिंदी। अरे अभिषेक जी, ओके, जरूर। वो पूरे मेजर्स बनाएगा आपके जो भी है, तो वो मेजर सारे। It is still running, so it will do. You can ask him so many. It will make whatever the matrix you want. It will make under that matrix year on year calculation है, उसका मेजर का फोल्डर बना देगा और उसमें डाल देगा सारी चीजें. So it is still running actually. That's why the errors are coming. Once it is done, we will see. ठीक है. For now, any questions, guys? कुछ questions है? Can you send Yeah. prompt? Sorry. Can you send prompt? Prompt. Sorry, like I didn't get your voice is little breaking. Can you send this prompt? Yeah, I will send. I will send. No problem. I will send. Okay, guys. Till now, any questions, guys? Again. So again, very, very important. So whatever the model we have created, I hope you guys you work with the Tyndall. Does anybody know about this Tyndall view? Okay. This is the Power BI model actually. So once you grab this semantic model into Tyndall, this is the tabular model data language actually. Okay. So हाँ ठीक है, बता देता हूँ। तो देखो ये जो सिमेंटिक मॉडल होता है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो आपका क्लॉड है ना, दिस क्लॉड इज गोइंग टू वर्क ऑन दिस मॉडल इंटायरली। ये पूरे 1000+ 10,000+ लाइंस का कोड होता है आपका। ये आपको नहीं करना था, ये पावर बाई खुद बना लेता है जैसे जैसे सारी चीजें करते हो आप। ठीक है, तो इसमें आपको सारे ये चीजें दिखेंगे, मेजर्स क्या क्या क्रिएट किए आपने, को देखना होगा ना यहाँ पे। तो ये देखो मेजर्स क्या क्या क्रिएट किए आपने यहाँ पे।
ये मेजर्स होता है, ठीक है। तो कंपनी में क्या होता है ना, डेवलपर हर बार फाइल ओपन नहीं करते बैठते, क्या करते हैं, सीधा सिमेंटिक मॉडल ओपन करते हैं, और हर एक डेवलपर उस सिमेंटिक मॉडल पे काम करता है। मतलब एक डेवलपर दूसरे डेवलपर से इंडिपेंडेंट काम कर रहा होगा। अगर उसने ये फाइल ओपन की है, मान लीजिए ए डेवलपर ने ये फाइल ओपन की है, बी डेवलपर भी उसने सेम फाइल ओपन कर दी है, बी डेवलपर हैज ओपन द सेम फाइल, दे डोंट नो ईच अदर व्हाट दे आर डूइंग, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो सिमेंटिक मतलब पावर बीआई में बेसिकली इस तरीके से कवर अप होता है, और आपका जो भी क्लॉड है वो क्लॉड इस सिमेंटिक मॉडल पे कनेक्ट करता है कंप्लीटली। ओके, सो दैट्स द थिंग आई वांटेड टू सी। आपके ईयर ऑन ईयर कैलकुलेशंस आ गए, ये मैंने टैक्स बोले थे ना आप यहाँ पे, जस्ट सी इज टेलिंग मी नाउ आई हैव क्रिएटेड दिस टैक्स। सो ये मैन्युफैक्चरिंग फिल्टर ऑल, ओके, ये सारे कर दिए उसने। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, फिजिकल ईयर ले लेता हूँ मैं। वेयर इज द फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर, सो दिस इज द फिजिकल ईयर। और मैं इस फिजिकल ईयर में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डाल देता हूँ। ओके, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर चेंज, ये ईयर ऑन ईयर चेंज बता रहे हैं आपको। ओके, मैन्युफैक्चरिंग फॉर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ओके, 110 का ग्रोथ हुआ है, 50 मतलब 55 का ग्रोथ हुआ है। सो इट विल टेल यू एवरीथिंग। ओके, तो इसको ऐसे मत सीखना कि सारे काम सर, तो सर ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइक एआई विल रिप्लेस अस, नो, नॉट एट ऑल। इसके साथ जाओगे ना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर पाओगे टीम को। ओके, और आई कैन से वर्क कर पाओगे, बिकॉज एक डैक्स नहीं लिखना होता है, 100+ डैक्स होते हैं। आपको हर एक बार नहीं चेक करते बैठोगे कौन से डैक्स में क्या लिखा है, कैसे एरर सॉल्व करना है, उस टाइम आपको ये क्लॉड यूज होता है। ओके, तो दैट्स द थिंग गाइस आई वांटेड टू टेल यू। यस सर, कैन यू सेंड notes also and you can send cloud downloads? Yeah, sure, we will send, no problem, I will send you. But yeah, guys, still have any questions? Let me delete this. No, not at all. Okay, how many of you heard about vertipack? हेलो। What? Yes, yes. एक्चुअली मेरा मुझे वो डेमो का जो रिकॉर्डिंग चाहिए था, मैं एब्सेंट था इस 5-6 दिन से। Guys, you can connect with the Vaishnavi और आशीष, वो बता देंगे आपको। देखिए मैंने एक को किया था, वो नहीं दे रहा है, बोला है वो स्क्रीनशॉट भेजो, ऐसा ऐसा बोल रहा था। नहीं, वो तो फिर ये लाइक आई कैन नॉट हैंडल दिस, लाइक उसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा, नहीं ऐसा ऐसा वगैरह। लाइव सेशन में जितना ज्यादा समझते हैं ना गाइस, जितना आप क्वेश्चन पूछ पाओगे, दैट्स द बेटर थिंग। आई नो आप बिजी होंगे, शायद जॉब में होंगे, प्लीज कंसल्ट कर लीजिए उनके हाँ, साथ एक बार आप, ठीक है। किसके नाम क्या है? सॉरी। क्या नाम बताया था आपने सर? आशीष? हाँ, आशीष वगैरह नहीं क्या, जिनके सिर्फ साथ आप कनेक्टेड हो उनसे आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। या, सो गाइस, यू नो हमारे पास इतने सारे टेबल्स हैं वगैरह सारी चीजें, इफ यू गो इनटू द टेबल यू कैन सी ऑल द टेबल। अगर मान लो इसका आपको मेमोरी साइज जानना है, कितने रोज है कितने कॉलम है, आप क्या करते हो बेसिकली, व्हाट यू विल डू, कैन एनीबॉडी नो? What? आई वांटेड टू आस्क, लाइक हमारे पास कितने कॉलम्स है, कॉलम एक कॉलम कितना मेमोरी यूज कर रहा है मेरा पावर बीआई का, पावर बीआई में मेमोरी होता है या नहीं होता है, वो बताइए पहले। दिस पावर बीआई हैज अ मेमोरी? No. Yes, सॉरी? yes, yes, yes. यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट Yes. मेमोरी कंपोनेंट? Vertipack or V velocity? या एक्स वेलोसिटी। Yes, vertipack. Yeah, so you can see the verti pack behind. Velocity. Yes, so you can see even Power BI's engine also. There is a one tool to see the Power BI's engine that is called as a DAX editor. So let me open DAX. Just let me, just for the knowledge purpose, I'm telling you these are the tools. This is nothing but, sorry, DAX Studio. So once I open the DAX Studio, just 1 minute. So once you open the DAX Studio, it will ask you for tabular server or Power BI. We have a Power BI model right now, project mine, that you already open. Just connect it. Okay. I don't know. So once connected, go to the advanced and view matrix. So okay, it will give me, see, this is the Power BI engine Vertipack analyzer. So it will tell you the all these things basically, like what is the fact name, it is the fact name. Okay, cardinality means what, how many duplicates values or unique values are there, what is the size of that table, what is the data it contain, okay, what is the size encoding, okay, data type, okay, everything. And then
what is the DB it is using, database, how much amount of database it is using, matlab how much amount of memory it is using in the Power BI. So see, fact table use the most amount of memory because fact table has so much amount of data, बहुत ज्यादा डेटा होता है उसमें. तो पावर बीआई में सबसे ज्यादा जो मेमोरी यूज करता है वो फैक्ट टेबल्स होते हैं. तो आप इसको ड्रॉप डाउन करेगा ना, से आपको दिखेंगे यहाँ पे कौन से कॉलम है, नेट सेल्स, ग्रॉस मार्जिन वगैरह, ये सारे. इसमें से बताएगा कितनी यूनिक वैल्यूज है और हर एक कॉलम कितना कितना यू नो परसेंटेज यूज कर रहा है, 16% या यूज कर रहा है. तो इससे क्या पता चलता है ना, आपको ऑप्टिमाइज करना होता है. यू वांट टू ऑप्टिमाइज योर पावर बीआई मॉडल, क्योंकि इंडस्ट्री में ऑप्टिमाइजेशन बहुत चीजें चलती है वहां पे. लाइक ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस आई कैन से, आपको पावर बीआई रिपोर्ट को कम से कम लाइक मेमोरी साइज में लेके आना होता है. ओके, कम से कम एप्लीकेशन मेमोरी साइज में, देन इट कैन वर्क फास्ट कंप्लीटली. तो सारी टेबल्स है, देखो यहाँ पे हर एक टेबल के बारे में बताया, उसकी साइज कितनी है, 61, 35%, 0.0. सबसे कम जो यूज कर रहे हैं ना मेमोरी आपका, दैट इज अ डीम टेबल्स ओनली, डायमेंशन टेबल. सबसे ज्यादा जो मेमोरी यूज करता है दैट इज अ फैक्ट टेबल्स. सो दीज आर द फैक्ट टेबल्स एक्चुअली, फैक्ट एक्चुअल एस्टिमेट्स. What application to be needed for Power BI project models? Can you send notes? So what applications? Yeah, I will tell you, just 1 minute. Okay, so this is the thing guys, you can use it here. This is the vertipack analyzer actually. Okay, you can write your code here also. You can like evaluate. There are so many things I don't want to cover in this lecture right now, but it will get again hampered to your brain and you behave like a brutal ways. So that's not a right way to do it here. But I wanted to explain you through this Claude. What is this Claude and all actually? Okay, guys. I hope you all are good with this session. I'm stopping here. Any questions? Hi, Akash. Yeah. Hello. Yeah. Hi. Actually, I want to know that you said in star schema there are multiple fact tables, right? So I'm little bit confused about. Can you explain it? Yeah. See, when we have a multiple fact tables, okay, fact to fact, it will create a multiple records. I can say duplicates value. Whenever you say ambiguity, don't tell ambiguity. The HR, there is technical persons, they know what kind of ambiguity. Then let me explain. So they will ask you, explain what kind of ambiguity. Don't tell ambiguities. Just tell them many to many relationship always create the duplicate records. Okay, because fact is nothing but what your numerical data. It will contain your primary keys, foreign keys, everything. Dim table create the unique values. Okay, so it is like a master slave application types, I can say. So when you want to connect one fact to another fact table, what do you need to do? In one fact table, suppose there is a two customer code, 1 and 2. Let me explain. So in one fact table, suppose there is a one number is there, two number is there. This is a one column. Okay, serial number. I can say serial number, one column. It is in one fact table. There is another fact table which will contain one number, two number, comma three number, comma 3 number, comma 4 number. This is the one fact table. Okay. Now I want to introduce, see, if I connect this now, it will create a one-to-many relationship. See, here it is also one, here it is also one, two, again two. Okay. So two to two, it get connected. It means it is again what I can say now, many-to-many relationship. Here also it will constitute two value will be there. 1 minute. Let me delete. Okay, two again is there. Two. Okay. Again three. Again three. Again three. So fact table can contain the duplicates, but dimension not. Dimension always has a unique value. So now suppose one is get connected with one. Okay. This two is connected with two. Again, this two is connected with this two. Okay. So this two is gonna get connected with the this two. So how many records are containing here? There are two entries. There is a one entry. एक रिलेशनशिप यहाँ पे बन गया, दिस इज अ वन रिकॉर्ड, ये एक बन गया, मतलब दो रिकॉर्ड्स बन रहे, दो डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही है. दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. तीन के साथ तीन कनेक्ट हो गया, ये वाला. अगेन ये तीन के साथ तीन कनेक्ट कर रहा है. Again this 3 will get connected with this 3. Okay, again this 3, multiple times it will get connected. So 3 to the 6, it will create a 6 record.
मतलब हमें वो नहीं चाहिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं चाहिए कभी भी। डिम टू फैक्ट रिलेशन कैसे होना चाहिए? फैक्ट कंटेन डुप्लीकेट्स वैल्यू, एनी वैल्यू, मल्टीपल वैल्यूज, बट डायमेंशन ऑलवेज कंटेन अ सिंगल वैल्यू, यूनिक वैल्यू। तो इस चीज को हम क्या करते हैं ना, बेसिकली अगर हमें मेन्यू टू मेन्यू रिलेशनशिप नहीं करना है, फैक्ट टू फैक्ट टेबल कनेक्ट करना है, सो व्हाट वी आर गोना डू, वी विल इंट्रोड्यूस अ वन डिम टेबल, डायमेंशन टेबल। हम क्या करते हैं, ये आपका टेबल है बेसिकली, एंड दिस इज योर वन टेबल। हम क्या करते हैं, दोनों का वैल्यूज लेते हैं या फिर यूनियन करते हैं। यूनियन क्या करता है ना, डुप्लीकेट्स रिमूव कर देता है आपके सारे भी। सो हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 नंबर से आपके, सो वट एवर दिस नंबर वी हैव, जस्ट लाइक एक्सेल। तो ये सारे जितने भी नंबर है, ओके, दिस इज द नंबर, वी विल टेक इट इन अ वन वन शीट, ओके। और ये भी सारे नंबर है, ये सारे नंबर इसके नीचे ले लेंगे, ओके। यूनियन ऑफ कंसेप्ट बेसिकली सिंपल। और इन दोनों में से क्या करेंगे, एक्सेल में जैसे हम डुप्लीकेट्स रिमूव करते हैं ना, रिमूव डुप्लीकेट्स, तो इसमें से रिमूव डुप्लीकेट्स हो जाएंगे, एंड इट विल सिंपली क्रिएट अ वन टेबल दैट इज कॉल्ड 1 2 और 3। इसमें सिर्फ यही 3 वैल्यू रहेंगी। नाउ आई कैन कनेक्ट वन फैक्ट टेबल टू दिस वन, ओके। तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, वन टू मेनी, एंड दिस अगेन वन फैक्ट टेबल गेट कनेक्टेड टू वन, ये हो जाएगा वन टू मेनी अगेन। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सॉरी ब्रिज टेबल और टारगेट टेबल। आई होप आपको लिटिल बिट थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। Yes. या यस साहिल। But we can't हाँ, say to this table is a sorry, this is star schema or snowflake schema. no, it is not a star or snow, it is just like a bridge table, we cannot say. But once you Okay. go into industry, you are going to understand this, no, why these bridge tables are introduced, okay. Yes Sahil. Okay. Sahil, your voice is not audible. Hello. Okay. Okay guys, if you don't have any questions guys, just we can stop it here then. Sir, I have a Memory in question. of, yes, memory in of Power BI Vertipack engine, I have put it in a chat. Yes. Yeah, so my question is that this सर हाँ, मुझे data मैकबुक का analytics. चाहिए। हाँ मैं बताता हूँ। हेलो, Yes. Yes, yes, I कैन will यू हेयर let मी you know. सर? Yes, yes. Hello. Hello. Yeah. Yeah, so my question is that actually everybody knows like this module is the completely is the combination of the four skills. So whichever the skill we need to more focus, the SQL also, the PBI also. Now in the PBI, with Vertipack and X Velocity, this is the engine of the like PBI to enhance the Mm-hmm. like report performance also. Hmm. Okay, so in that part, where how much time it will be taken to learn about all this stuff. How much time it will take, you are asking me? Yeah. See, it is just like I can say now 1 to 1.5 months of duration you require right now. If you learn the Power BI now completely, then it is very easy to learn other tool, DAX Editor, ALM, and this Cloud integration. So that won't take more than 1 year of time actually. Sorry, 1 month of time. 1 month of time. All those stuff If like you that want, we studio and can. That studio now, that's what I'm telling you, 15 to 20 days. But if Ashish or Vaishnav what they want, if we want such kind of lecture now for DAX Editor and all, we can keep it genuinely, completely. I can explain it within 1.5 years completely. So no need to study all these things. I'll include in a one lecture session complete. okay. Mhm. If they don't have the questions. सो मेरे को कब मिलेगा लिंक? Sorry? सर वो मैकबुक के लिए लिंक पावर बीआई का? मैं दे देता हूँ एक्चुअली, इनको दे देता हूँ मैं, आशीष उनको प्रोवाइड कर देता हूँ, दे विल पुट इन अ ग्रुप, ओके, एंड नोट्स भी भेज देता हूँ मैं इसके। ओके ओके सर। सर मैकबुक या का कैसे इंस्टॉल करना वो भी भेज दीजिएगा। ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। ओके, ओके देन। Nobody has any questions, so we can end the session. Guys, do you have any question for the Akash sir?
No. Not yet. Okay. Yeah, Akash, we can like end the session. They Sure. don't have any questions. Yeah. Got it. Okay. Then make sure, guys, just put it in your resume also. It's a very good impact actually for you guys, I'm telling you. And we can definitely connect for your tax editor, ALM application lifecycle management. It's very much interesting actually. You will love it completely. Okay. So just don't be depend on the reporting and all. Just like play with the data also. Okay. Okay, guys. Then good night. Bye. Thank you Good so night, sir. much. Bye. Thank you. Bye. Okay, bye.